So, a very good evening to all. Today we are going to discuss on a very important topic that is your today's master class जो है आज का discussion. So the topic for today is physical pharmacy. Physical pharmacy. If you remember, the topic of various importance, we have जो important topics है as far as concerned regarding your B.PHARM as well as for your pharmacy. We know that physical pharmacy is one of the vital subject. One of the main subject of concern is physical pharmacy. Take it. And why we need to study this subject. मेरे को याद है when we were a student, the physical pharmacy, as usual, used to be a subject matter of phobia. We used to fear the subject very much. So हमको डर लगता था कि सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ेंगे, हाउ टू स्टडी द सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो है ना फोबिया, फिजिकल फार्मेसी के ऊपर है फोबिया, ये तैयार किया जाता था. फर्स्टली students, seniors, as I told you, the seniors used to play a very vital role in showing the physical pharmacy as a very, very tough subject, number one. Number two, uh, there were some teachers. We unfortunately we didn't got much good teachers who were helping us to understand the essence of physical pharmacy. It was just a matter of completion of the course, some completion of the big syllabus in a year. We used to have annual exam. So this whole physical pharmacy used to be one subject, and it was a nightmare for us. Frankly speaking, it was a nightmare for us. But I understood it about the details. मेरे को ये समझ में आया जब हम लोग M farm में थे. So when I was in M farm, when I was in the M farm, so I understood the subject's importance. I start understanding it, and the learning went on continuing till I was in my when I was in industry. So जब मैं इंडस्ट्री में था, स्पेसिफिकली R&D में था, तब इसका इम्पोर्टेंस मेरे को ज़्यादा समझ में आया. एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, I used to carry this Martin with me even when I was working in R&D. तो उस टाइम में समझ में आया कि what is the importance of this physical pharmacy. Now ये physical pharmacy होता क्या है? Physical pharmacy is something which helps you to deal with the physico-chemical aspect of your formulation. Remember, ये बात को याद रखो. Physico-chemical aspect of your formulation. Physico-chemical aspect of formulation मतलब क्या होता है? Physico-chemical aspect of the formulation मतलब है कि जो formulation तुम तैयार कर रहे हो, the formulation which you are preparing, that formulation comprises of two things. One is your excipients, one is your drug. So you have to understand the physiochemical aspect of the drug. You have to understand the physiochemical aspect of the excipient, as well as the physiochemical aspect of how you are mixing them together and preparing as a holistic formulation. That is very, very important. That is very, very important. And this is what we learn in the physical pharmacy. Not only we learn about the physiochemical aspect of the API or the excipients, we also try to evaluate the various physical aspects of the formulation. So is something here you learn a lot of things which is related or relevant in the subject of physics as well as physical chemistry. फिजिक्स का बहुत सारा टॉपिक्स है जो यहाँ हम डील करते हैं. सबसे बढ़िया बोले तो रियोलॉजी, then you are having interfacial tension,
Okay. um, then in that rheology you'll be getting surface tension. Then you get something called as colloids. So colloids comes under physical chemistry. Then solubility, solution, this all comes under physical chemistry. As well as you get to know about the micromeritics. So micromeritics, a bigger portion, comes under the topic of your physics. So physics, physical chemistry, ये सब चीज मिला के जो what the subject you get, mainly the subject which you get, is called as physical, what you call it as uh, this the subject of physical pharmacy. तो फिजिकल फार्मेसी सब्जेक्ट को समझने के लिए पहली बात, ये जो पूरा स्टोरी मैंने बोला इसको समझिए, इसका इम्पोर्टेंस समझिए, इसका यूजेस समझिए, हाउ इट इज वेरी एसेंशियल फॉर यू इन फ्यूचर. If you are thinking to make your future in formulation R&D, or if you are thinking to make your future in what do you call, even in the R&D research, academic research, everywhere you need to know this subject. You need to know this subject. So before going much in details, first you should understand the books. You should know the names of the books, because you need a pathway, a good pathway, a map, how you should move in that particular direction. अगर आपको कहीं अचीव करना है, कहीं पर जाना है आपको, तो आपको एक मैप चाहिए, एक गाइडिंग मैप और डायरेक्शन बुक चाहिए जो आपको गाइड करेगा कि कैसे कैसे आपको जाना है. नाउ अगर इसके फिजिकल फार्मेसी के बारे में बोलेंगे तो मैं कुछ ज़्यादा एग्जांपल्स नहीं दूंगा. ज़्यादा बुक्स, बहुत सारे बुक्स है, पर अगर बोले एक्सक्लूसिवली बुक, तो आप सभी को पता है, दैट इज मेनली इज द मार्टिन. मार्टिन का जो किताब है फिजिकल फार्मेसी का किताब, बहुत पुराना है. हम लोग जब पढ़ते थे वो रेड कलर का बुक का कवर में आता है, रेड या ब्लू कलर का हार्ड बाइंडिंग में आता था. अभी वो मल्टी कलर हो गया है, थोड़ा मोटा सा भी हो गया है. तो मार्टिन एक बढ़िया बुक है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं. इंडियन ऑथर में मेरे को जितना दूर याद है, हम लोग जो पढ़े थे, द बुक विच वी हैव गॉन थ्रू, हम लोग जो पढ़े थे वो समथिंग कॉल है सी बी एस सुब्रमण्यम. बट सी बी एस सुब्रमण्यम से भी मैं बोलूँगा कि मार्टिन इज मच मोर बेटर alternative or option which you can use for studying this subject. So I would request you all, so you try to get this book. It's not very, it's not a big price book. Now it's available in Amazon also, it's available. अब बहुत से किताब अभी और निकले हैं, बट आई विल नॉट सजेस्ट दोज बुक्स. अभी मैं कैमरे के सामने जो अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा तो आई विल सजेस्ट द बेस्ट वन. आप दूसरे किताब भी पढ़ सकते हैं, बट इन दोज बुक्स लाइक प्रीवियस टाइम आई टोल्ड इन माई लाइव, like those books need to be evaluated. I have not done any evaluation of other books. जिस जो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड है, जो पीसीआई भी अप्रूव करते हैं, जो लिस्ट ऑफ बुक्स में, वो दो किताब कंपलसरी आपको मिल जाएगा. तो ये दो किताब आप देख सकते हैं. उसको ये छोड़ के you will get certain topics, important topics, even in the book of Alton. So if you go, and I will also suggest another book, that is Alton. So you can have that book also as a part of your reference. But क्यों मैं बोल रहा हूँ बुक्स, क्यों सर आप बुक्स बोल रहे हैं, आप खुद ही तो देखिए. मैं तो डील करूँगा सब्जेक्ट को. अब आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ गिविंग स्मॉल बिट ऑफ वीडियोस. इट विल स्टार्ट प्रॉब्ली बाय दिस वीक. विल स्टार्ट गिविंग 5 मिनट 6 मिनट का छोटा वीडियोस आएगा, जो किया आपको, आई विल बी लाइक दिस, आई विल बी इंटरेक्टिंग. सो माई वे ऑफ टीचिंग इज लिटिल बिट डिफरेंट. So I have done some videos and will be posting it in near future. Maybe tomorrow or day after tomorrow it will start. तो ये क्या है, छोटा वीडियोस रहेगा जिसमें आपका क्रिस्पी करके हम लोग टॉपिक को तोड़ के उसको अपलोड करेंगे. तो क्या होगा, आपको समझ में आएगा सब्जेक्ट्स. ऐसे अगर मैं पूरा टॉपिक को आज ही सम अप कर देता हूँ तो क्या होगा, ये you will not get the interest in learning this topic. Okay, you will not get the interest
to learn this topic. So that's the thing I would say कि better we will do it in a slow fashion. अभी मेरा चैट बॉक्स बंद है, आई एम नॉट सीइंग एनी चैट्स राइट नाउ, सो जस्ट लिसन टू मी व्हाट आई एम सेइंग. सो फिजिकल फार्मेसी को आप कैसे पढ़ेंगे? सो आई विल बी टेलिंग यू द ट्रिक राइट नाउ. सो फिजिकल फार्मेसी को अगर आपको पढ़ना है तो एक चीज़ याद रखिए, उसका एक टेक्निक है. एक टेक्निक है जो मैं आपको बोलूँगा. पहली बात है कि इसका जो जो भी आप पढ़ने जाते हैं, कभी भी कोई भी टॉपिक आप पढ़ने जाते हैं, इसको ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है. इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है. मैं दिखा देता हूँ अभी आपको कैसे होगा ये. सपोज कहाँ गया, होपफुली ये दिख रहा है आपको. सो दिस विल बी इजी फॉर यू. सो सपोज आपका टॉपिक है तो पहली जो चीज़ है वो है आपका क्या है, कंसेप्ट. कोई भी टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसका थियरी रहेगा. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज कॉल्ड द कंसेप्ट. उसमें डेफिनेशन आएगा. सो इट मे बी सम लॉ, कोई लॉ हो सकता है, कोई डेफिनेशन हो सकता है, कुछ एक्सप्लेनेशन हो सकता है, कोई फेनोमेनन का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. So that's what we are calling a concept. So concept is nothing but what you see in your eyes, what is happening before you, what you visualize is the concept. Now what happens, ये जो concept है इसको हम logic, we put logic on it, we try to reason it. So when we go for its reasoning, mostly what we do is we go for its mathematical reasoning. Mathematical reasoning. Mathematical reasoning क्या करते हैं हम? We generally go for a formula. So आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो फॉर्मूला है ढूंढना पड़ेगा. यहाँ पर कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है कि नहीं. मोस्टली you will find 80%, 25% of the concepts which is being discussed in physical pharmacy has some formulas, mathematical formulas. तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज में क्या है, आपको वो जो यूनिट्स है, वो जो सेक्शंस है, उसका सब कुछ अंडरस्टैंड करके you have to remember those things properly. Okay, so it's not like you should means क्या है, you just see that matter and leave it, because this is very important. At least understand this formula. Now what will happen, you will see one thing, this formula will be converted into some line equations, some graphical equations or line equations. Mostly they will be going for a straight line equation, y equals to mx plus c, ऐसा करके कोई एक लाइन इक्वेशन रहेगा. दे विल ट्राई टू कन्वर्ट इट, मोस्टली लीनियर कोरिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. सो दिस विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड this will be your independent variable and this will be your dependent variable. So ऐसा करके एक फॉर्मूला आपके पास रहेगा. आपको वो अंडरस्टैंड करके वो ग्राफिकली वो कैसा रिप्रेजेंट हो रहा है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कुछ भी नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप कुछ भी आ सकता है. तो वो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ आफ्टर दिस, सो यू गॉट अ फॉर्मूला, सो कंसेप्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग, इसमें फॉर्मूला आएगा, इसमें ग्राफिकल, तो उसके बाद एक ग्राफ आएगा. After graphical representation of your formula, you should know they'll be deriving some constant values or some exclusive properties or phenomena from for the concept. So you should know the unit in which it is being expressed. You should know the unit in which it is being expressed. So that's the thing you should understand. तो ये जो चीज़ मिडिल का जो सेक्शन है, दिस इज द हार्ट ऑफ योर
reasoning. You should understand how it is being reasoned, how it is being understood. Okay, ये पहला चीज है। दूसरा, उसके बाद what you have to do, you should know what is its application. So application matlab, what is application matlab? You should know what is its what is its pharmaceutical application. That's the important thing. You should know what is the pharmaceutical applications. So ek do karke you should understand what is the thing. Now there may be for this concept to reason out ये equation, suppose a y determine करना है, so there may be some instruments which are being used. There may be some instruments which are used to determine your variable. Okay, that is being used to determine your variable. So ये जो machine रहेगा, you should know its construction, working, its construction and working of that particular instrument which is being used to determine this particular variable. तो ये जो total चीज है, this is how you should approach a point, a topic when you are studying the physical pharmacy. मैं बोल देता हूँ फिर से एक बार। पहली बात है concept. You should know the concept. You should understand the concept. You should know the definition, explanation, or some universal law that is being discussed over as a part of the concept. Next comes your mathematical reasoning. The mathematical reasoning comes in sections, in three sections. Firstly, as a formula that will be derived by some scientist who had done a research on this concept and has given some formula. That formula may mostly will be as a straight line equation, and then after this formula, this straight line equation will be converted into a graph, that is y equals to mx plus c. कैसा होगा when we will discuss small bits of information, then I will do. Abhi, just remember how what is the structure. So there will be a graph based on this line equation. You have to derive that graph, or you have to derive this equation, and you have to understand how this y or the variable, dependent variable, is being determined. Next comes the instrumentation part. Instruments means जो machines or devices जो use करते हैं for determining this unknown variable y. तो उसको डिटरमाइन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, मोस्टली आपको उसका एक डायग्राम आपको याद रखना पड़ेगा. दैट इज मोस्टली दैट इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्टली देयर वर्किंग जो होता है, हाउ हाउ इट इज वर्किंग, इसका कैसे यूज होता है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन पॉइंट, ये छोटा छोटा चीज़ है आपको पढ़ना पड़ता है. सो how they are coming, you should understand this chronology, how we are approaching the things. So this reasoning, after the reasoning comes lastly is your pharmaceutical application. So कोई भी topic, any topic which we will be coming across in the field, in the in the case of physical pharmacy, will be in these three sections. कोई भी topic आपको लर्न करना है, ये तीन हिस्सों में इसको तोड़ दीजिए. जस्ट डिवाइड इट इनटू दिस थ्री सेक्शंस. ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो अबाउट द टॉपिक. इज वेरी इजी, इज वेरी इजी अप्रोच टू गो फॉर इट. मोस्टली व्हाट हैपेंस इज, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वी गो फॉर द अप्रोच लाइक एनीथिंग लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड. डोंट गो फॉर दैट. You make a mind map. You know what is mind map? Do you have any idea of mind map? So you should know what is a mind map. कोई भी टॉपिक होगा ना, तो उसको आप तोड़ लीजिए. So maybe some topic will be there. So what you have to do, you have to break this, you have to use the concept of mind map.
You have to use the concept. You have to do a mind map. What is, suppose we are going for studying the topic of rheology. Suppose I'm saying rheology. So rheology so in the rheology we will be knowing what is rheology, how it has been expressed. Then what we'll do, rheology को हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे. Based on the flow property, we will be going as a Newtonian flow, इसमें नॉन न्यूटोनियन फ्लो. सो न्यूटोनियन फ्लो में फिर हम इसमें डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द विस्कोसिटी, देन टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, देन उसका यूनिट्स. नॉन न्यूटोनियन फ्लो में प्लास्टिक, स्यूडो प्लास्टिक, डायलेटेंट फ्लो, ये जब चीज़ें हैं दे विल स्टार्ट कमिंग. देन व्हाट इज what you call thixotrophy. Okay, so all those kinds of topics, how you are estimating it, all these things will be coming. So what you have to do is you have to make a flow chart like this. कोई भी एक बड़ा सा पेपर लेके फ्लो चार्ट बनाओ. Get the information, put in this. Okay, now there are a lot of softwares which are available in the net. There are like mind map, MUP. Mind map is there. Okay, you can search a number of mind mapping what do you call softwares in the uh, Google search. You will be getting it online. You can link with your Gmail and you can use it. So that will be giving you a whole structure of your one whole chapter. You can take it and make a mind map, and then you can assess. तो आपके पास अगर माइंड मैप रहेगा तो क्या होगा, कोई भी टॉपिक को आप स्टडी करने में दिक्कत नहीं होगी. सो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक टू डिस्कस रिगार्डिंग व्हेन यू आर अप्रोचिंग द टॉपिक्स. तो इसमें क्या होगा, इसमें आप बेसिक चीज़ें लिख के रख सकते हैं. And even we want to go in much deep conditions, the keywords, the key sources, what are essential, so that you can structure it out and remember it when you are revising. Basically, this helps. This mind map helps you when you are doing your revisions, your monthly revision or weekly revision. कोई topic का करेंगे, so that time this mind map help you to track down what is the topic and how far you remember. So you should use this mind map techniques to remember the matter. क्योंकि ये जो है you have to remember various things like the concept, the mathematical formulas, the units. ये सब चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है. Now what you have to do, now the thing is what you have to do, you just remember one thing कि हमारा जो सिलेबस है, if you just gone through the syllabus, you will be getting lot of things as a part of your syllabus. So I will suggest like what to study. If you say, sir, what you have to study, then study as clusters. Study as clusters का मतलब क्या है, like you just make a cluster of the topics together. So if you just go, there's a very easy way to have it. Like if you just remember, I do remember, this is my Martin book. This 10 years, 20 years back, I had this book with me. So in that, almost the topics. So firstly, if you say, make it a note, the first thing we should have, you should follow this. I follow this content very much. So I don't make much changes in this. Firstly, you have the basic principles. So in the basic principles, you go for like the states of the matter, the thermodynamics, the two laws of thermodynamics, what you have, and the states of matter. Mostly you go for this solid, liquid, gaseous states, and in that you'll be getting something called as liquid crystals and what are the different types of liquid crystals. Then you go for the binary and the ternary phase system studies. Those things you have it. Thermodynamics, in the thermodynamics, the first and the second law of thermodynamics.
I will suggest that, see, don't waste much of your time in thermodynamics, because what I have seen, thermodynamics, the concept is very essential to as a part of learning process to make or build up your logic is concerned. But if you say the application point, so it is not having that much direct application point of view. Then you have determination of the physical properties of the molecule. So in that case, if you go for understanding the physical properties of the molecule, so you have to learn the topics which are called as the additive property and the constitutive properties. So if you know what is additive and what is constitutive, additive properties means like the properties which are the sum total of your atoms or the functional groups which are present due to the addition and deletion. So if you add up, it will increase. If you reduce the atoms or if you reduce its concentration, the amount will get decreased. This includes your molecular weight, your mass, then your freezing point depression, boiling point elevation, osmotic pressure. This somewhat related to your concentration. So जितना आपका एटम्स रहेगा, जितना आपका एटम्स ऐड होगा, ठीक है, कंसंट्रेशन, इनडायरेक्टली आप बोलेंगे कंसंट्रेशन जितना बढ़ेगा, उसका क्या होगा, उसका जो प्रॉपर्टी है वो आपको ज़्यादा दिखेगा, इट विल इंक्रीज। वो अगर घटता जाएगा तो वो जो प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं वो भी कम होता जाएगा। Constitutive property matlab these are the basic properties, or you can say this is built-in properties. It is in the DNA, you can say ये DNA के अंदर है। So ये क्या है, ये उसे हिसाब से घटता बढ़ता नहीं है, ये ऑलमोस्ट फिक्स रहता है। आप जितना भी लीजिए, ज़्यादा लीजिए वो जो दिखाएगा, आप उसका कम लेंगे तो भी वो सेम दिखाएगा। So that is the nature of that particular मटेरियल व्हाट यू आर यूजिंग, वो आपका सेम ही रहेगा। मतलब वो ज़्यादा लेने से वो नहीं बढ़ेगा, कम करने से वो नहीं घटेगा। जैसे मॉलिक्यूल, जैसे आपका मास जो होगा, अगर ज़्यादा लेंगे तो वज़न में ज़्यादा हो जाएगा, अगर आप उसको कम करेंगे तो वज़न में कम हो जाएगा। सो घटता बढ़ता है। पर इसमें क्या होगा, लाइक आई विल से विस्कोसिटी, एक अगर आप 5 ml एक लिक्विड को लेके आप उसका विस्कोसिटी मेजर करेंगे, जो दिखाएगा, अगर आप वही सेम चीज़ को 1 लीटर एक जार में लेके उसका विस्कोसिटी डिटरमाइन करते हैं, वो भी सेम दिखाएगा। वो घटेगा भी नहीं, बढ़ेगा नहीं, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज ए इन मीन्स नेचर। उसका जो यू कैन से द एटॉमिक एंड द फंक्शनल अलाइनमेंट, फंक्शनल ग्रुप का जो अलाइनमेंट है उसकी हिसाब से उसका नेचर डिटरमाइन होता है, उसका कंसंट्रेशन से नहीं होता। तो दिस इज द थिंग। सो यू हैव सपोज लाइक मोलर रिफ्रैक्शन, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट, ये सब चीज़ें उसमें आता है। सो इन दिस डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये जो concept है which you have to understand. So before going into this, these are the basic things which you should clear off. Then we have something called as their equilibrium phenomenon. उसमें क्या है, आपका solutions and solubility बोल के एक चैप्टर आता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, देन योर complexing, okay, then your EMF, electromotive force, determination of pH वगैरह, ये जो चीज़ें, these comes. So this is one section I'm saying. So you should study in cluster. These are the various clusters we should, when you are studying it, study it together. Don't study it isolated. So you are having non-electrolytes, electrolytes. I don't know about the syllabus. Okay, I'm saying in general how you should. Electrolytes, non-electrolytes, ion equilibria, buffered and isotonic solutions, solubility, distribution phenomenon. ठीक है, ये जो टॉपिक्स है ये एक साथ पढ़ने का, यू शुड कम टुगेदर। ओके, ये जो टॉपिक्स है, और कैसे पढ़ने का मैंने अभी बोला, पहले कंसेप्ट्स देखो, उसके बाद उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड देखो, उसमें कोई मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि नहीं। वो मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है उसको 3 हिस्सों में तोड़ो। पहली बात, उसका जो फंक्शनल ग्रुप है, सॉरी उसका जो फार्मूला है, उसका जो फार्मूला जो डिराइव हुआ है उसको स्टडी करो, एक एक हिस्से को देखो क्या क्या उसका वैल्यूज़ है। फिर उसको ये जो फॉर्मूला है उसको देखो कि वेदर इट इज़ बीइंग अरेंज और अलाइन इन अ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन और नॉट। जनरली मैं बोल देता हूँ आपको, आप देख के मिला लीजिए, मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस आर स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस।
मोस्ट ऑफ द इक्वेशंस आर स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस। ये दिस इज व्हाई अब ये पूछेंगे कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशंस क्यों बनाते हैं, बिकॉज फॉर अ बेटर कोरिलेशन, अगर आपको कोरिलेट करना है, सपोज मैं आपको चीज समझा देता हूँ, दिस इज मे बी बियॉन्ड योर टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बट आई विल बी सेइंग दिस थिंग। ओके, सपोज you are having these two. Okay, you are having, so what I told you, this is x-axis and this is your y-axis, this is your y-axis. So generally कुछ values रहेगा जो x-axis में रहता है। जैसे मैं बहुत कॉमन एग्जांपल देता हूँ जो आपका बायोफार्मास्यूटिक्स में भी यूज होगा और फार्माकाइनेटिक्स में भी, ये क्या बोलते हैं आपका फिजिकल फार्मेसी में भी आएगा, जो काइनेटिक्स में आएगा आपका। ठीक है, एक है कंसंट्रेशन, दूसरा होता है टाइम। बहुत सिंपल। ओके, कंसंट्रेशन एंड टाइम। ठीक है, अभी क्या होता है, ये जो टाइम है ना, दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो जितना आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेगा जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, उसको हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं, जिसको हम एक्स एक्सिस में लिखते हैं। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स बोलते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कंसंट्रेशन, चेंजेस ऑफ द कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन एक्स, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन डिपेंड्स ऑन टाइम। तो ये जो है आपका वो चला जाएगा आपका वाई एक्सिस में। ठीक है, अभी क्या है, तो यहाँ पर क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स होगा, सीधी बात। y इज ऑलवेज द फंक्शन ऑफ x, यानी y का वैल्यू चेंज करेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x विच इज इन योर ग्राफ। ये जो ग्राफ में जैसा आपका है ना, उसी हिसाब से वो चेंज होगा। तो आपको याद है जिसका ये जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन है, ये क्या होता है, इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे वाई एक्स में ड्रॉ करेंगे तो ऐसा आता है। ठीक है, c इक्वल्स टू c नॉट e टू द पावर माइनस के टी, ये है इक्वेशन। ठीक है, अब मत पूछिए कि कैसे कैसे डिराइव करना है, वी आर नॉट गोइंग इन डेरिवेशन, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, जस्ट सी इट। ओके, तो ये जो इक्वेशन है, ये क्या स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, तो क्या करना पड़ेगा, मैं सपोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स पढ़ रहा हूँ, सो व्हेन आई एम स्टडीइंग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, मेरे को समझ में आया कि समथिंग इज देयर, c इक्वल्स टू c नॉट e टू द पावर माइनस kt, दिस इज द इक्वेशन। c स्टैंड्स फॉर कंसंट्रेशन, c नॉट स्टैंड फॉर इनिशियल कंसंट्रेशन, सो हियर c नॉट रहेगा, k is the rate kinetics and t is the time। तो ये जो चीज, these are the variables which are present in this variables। क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके ऊपर डिपेंड करता है, टाइम के ऊपर डिपेंड करता है फर्स्ट ऑर्डर में। सो c इक्वल्स टू c नॉट e टू द पावर kt, ये आपका आएगा। अब मजे का चीज देखो, अभी क्या है, इसको हम कभी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बोलते, इज इट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, नो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो क्या होगा, ये जो कोरिलेट करना चाहेंगे ना, ये कोरिलेट आसानी से नहीं होगा। दिस ग्राफ यू कैन नॉट कोरिलेट द वैल्यू ऑफ y विद द वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली। आपको जब वैल्यूज को प्लॉट करेंगे, ग्राफिकली प्लॉट करके उस पर इंटरपोलेट करेंगे ना, तो वैल्यूज को कैलकुलेट करने में आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी। तो क्या है, इसको हम will convert this equation to a linear equation। तो उसको क्या करेंगे, linearity लाने के लिए we will be going for taking log। so if you take log on both the side, it becomes log c equals to log c naught minus kt divided by 2.303। ये जो इक्वेशन, this gets converted to this। मत पूछिए ये कैसा हुआ, डोंट आस्क मी राइट नाउ कि सर प्लीज एक्सप्लेन दिस, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन राइट नाउ। तो जब मैं काइनेटिक्स का टॉपिक डिस्कस करूंगा तभी मैं इसको खुल के आई विल गो इनसाइड। एंड इफ यू वांट टू नो दिस, जस्ट गो टू माय यूट्यूब चैनल, देयर इज डिस्कशन रिगार्डिंग फार्माकाइनेटिक्स में रहेगा, फर्स्ट ऑर्डर फार्माकाइनेटिक्स में, देयर यू कैन सी हाउ इट इज बीइंग डिराइव्ड। सो
For time being I am just removing this. So अभी इक्वेशन कैसा बनेगा, तो देखो इक्वेशन कैसा बन जाएगा. सो बन गया log c इक्वल्स टू log c नॉट माइनस के टी बाई 2.303. तो ये ऐसा आपको इक्वेशन आपको दे देगा, आपका ऐसा इक्वेशन आएगा, आपको ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा क्योंकि दे हैव डिराइव्ड इट एंड दे हैव फाउंड अ लीनियर कोरिलेशन. So they will say it as this is your y and this is your x, okay, and suppose negative, so negative slope will be coming. So this is the equation. This probably will be your law in intercept value. Intercept value रह सकता है, कहीं कहीं intercept value will नहीं, may not be there, okay. If it is passing through the origin, so there will be no intercept value, okay. अब क्या होगा, इसमें से स्लोप रहेगा, सो वगैरह वगैरह वगैरह. सो दोज थिंग्स विल बी लेटर पार्ट ऑफ डिस्कशन. व्हाट आई मीन टू से कि जो कंसेप्ट है क्या था, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स. फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या बोलता है कि व्हेन यू आर हैविंग द कंसंट्रेशन, द rate of concentration, the change dependent on the time dependent change in the concentration happens in the case of first order kinetics. So that is the concept. Now that concept is being converted into a equation. The equation was c equals to c naught e to the power minus kt. Now that c equals to c naught e to the power minus kt is being converted to a straight line equation first and then to a graph, okay, and then I am determining the value of c or the concentration. तो उसके बाद जो करना पड़ेगा आपको सो है आपका यूनिट. सो कंसंट्रेशन के यूनिट क्या होगा, जो रहेगा आपका mg पर ml, माइक्रोग्राम पर ml, कुछ भी जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर वो देना पड़ेगा आपको. सो व्हेन यू गिव दिस वैल्यू, सो it completes the entire thing of mathematical logic. So ये mathematical logic होने के बाद then you come for estimation. अगर कोई machine use होता है, mostly in most part of the discussions you will come across there are a lot of machines that are used. So when you are going for the particular machines, so machine का आपको देखना पड़ेगा इस construction क्या है, basic construction को discuss करना पड़ेगा, वो दिया रहेगा. So based on which you are working. Next you will be studying its construction, and you have to see how it works, how the machine works, and its advantage or disadvantages if it is there, and its application point of view. So these are the few things if for the instrumentation part comes with the theory. And lastly is the application. So most important thing is always you should search what are the pharmaceutical application point of studying that subject or that particular concept. If you don't understand that particular concept in terms of pharmaceutical application, that will be difficult for you, okay. So this is the important thing. So I was going. So next, what you are having is your kinetic phenomenon. So kinetic phenomenon means movement of molecules are taking place. So mostly the topics which comes under it is number one is the chemical kinetics, the topic which I was discussing right now as an example. So chemical kinetics and drug stability. So in this topic, what we actually learn is regarding the drug stability means it is we are studying the that how far the drug is active principle of the drug is present or how fast the drug is getting degraded, what are the factors that is affecting the drug degradation in the kinetic process. So these are the things which we are actually studying. And then you are having that drug release and diffusion. So drug release and dissolution, so this is the important phenomenon where you come across this noise with equation or fixed law of diffusion, these topics, fixed first law of diffusion. So these topics entirely deals with like how your drug is getting released in a surrounding environment. Mostly this topic is essential when you are studying your oral drug release. Mostly majority of your syllabus is concentrated on oral drug release. So these topics are very essential as far as the syllabus is concerned. In future also when you go for
the R&Ds, most of the R&Ds, a major chunk of your R&D work will be related to your oral drug deliveries. Majority, I'm not saying all. A majority of will be related with your oral drug delivery. So when you are dealing with the oral drug delivery, always your discussions will be somewhat related to the dissolution, tablet dissolution or enhancement of dissolution. You have to see that there are certain drugs which are having low solubility, so you have to go for this enhancement of solubility, which will in fact impact its dissolution. How the dissolution takes place, so what are the methods of dissolution. Okay, now there are certain things where you need to study the diffusion across some membrane or some barrier system. So that's a diffusion system. So there it comes your first law of diffusion, second law of diffusion, all those things will be coming. Okay, and lastly is your biopharmaceutics. So biopharmaceutics I'm not going again, because I have discussed about this biopharmaceutics in my previous live master class regarding when I was discussing about the biopharmaceutics and pharmacokinetics. So these are the things. That fourth one, I have certain thing to be said. Like the fourth one is called as the dispersed system. So this is a very important topic, and I include certain things in this. So when you are going to study regarding the dispersed system, there are, you just follow this chronology. Always follow this chronology. Okay. First thing which you should know or which you should study. One, when you are studying this dispersed system or understanding the concept of the dispersed system, is the interfacial tension or interfacial phenomenon. IT, interfacial tension, surface tension, interfacial tension, that you should study. That is very important. A dispersed system is another topic, important topic, apart from your the topics which are related or relevant to oral drug delivery. So this is dispersed system. First thing you should study is interfacial tension, or you should have a clear idea of what is surface tension or interfacial tension. Okay. Next, you should know something called as rheology. I'm not going into how it is in the book. Follow this. Rheology. Next, you should know about rheology. What is rheology? The study of the flow. Now, viscosity is a part of rheology. Make it a point. Viscosity, study of the viscosity is a part of the rheology, which is a resistance to the flow. It's called as rheology. Viscosity. Then after completing this, when you have completed, then go for coarse dispersion. Now, coarse dispersion. What is coarse dispersion? Coarse dispersion includes the topics such as suspension. Okay, the theories behind suspension, the Stokes law. If you remember, you are studying from your first year, so that will be coming under this topic of suspension. Then you will be studying something called as your emulsions, various kinds of emulsions, and how you go for the stabilization or the instability issues that are with the suspension and emulsion, and rectifying the stability issues that are with the suspension and emulsion. This comes under as your post dispersion. Then you are having something called as colloidal dispersion. Colloids. Colloids or colloidal dispersion. So in colloids or colloidal dispersion is the gateway to nanotechnology. Take it from me. Take it from me. Colloids, when you are discussing in the colloids, the properties, the essence of the colloids are the basic pillars of your nanotechnology. If you want to have your future in the nanotechnology, make this subject, this topic very clear in your heart and mind. Okay? All the things, the concept, the mathematical background, and its application regarding this topic of colloids should be very clear to you. Okay, don't study it for the namesake, because this is the gateway to nanotechnology. Because this is the actually colloids generally comes as a submicron.
particulate systems are called colloids. So you know what is submicron particulate system. That's why I'm saying it as this is the gateway of you to the nanotechnology. Okay. So if you need to understand colloids, first you need to clear off your ideas regarding the topics of suspension, emulsion, and force dispersion. Before that, you should know about the rheology. Before that, you should know about the interfacial tension or surface tensions. All the topics. So based upon the structure which I have started with, the same structure you should follow over here. So this is how you should finish off this topic of discussion. Okay. Um, if I remember, I do have missed one topic that is important topic, but that's not. This is what for the disperse system. This is very essential. This topic is very essential for disperse system. Now there is another topic which is pending, and that is something called for your oral drug delivery system. So that is very important for your oral solid drug delivery systems. So that's what we call it as micromeritics. What is micromeritics? Micron means micron size particle. Meritics means to measure the micro size particles. How you are measuring. Now this is a phenomenon which comes under a greater subject, that is your compression and compaction. If you remember, you have studied physics of compression, tableting, physics of compression, tablet compression. If you remember, you have studied, maybe in the masters you will be studying, but that is also a very big topic. So, compression and compaction, compaction physics. So, macromagnetics is a part of it. So, you should firstly know about this macromagnetics. What are the techniques by which you could measure the particle size? So this is actually an important topic for your oral solid oral delivery system. So this somewhat. So I hope I cleared off the discussion. I gave the clusters, and I think it's very clear to you right now कि आपको कैसे इसको पढ़ना पड़ेगा. Hopefully. तो पहले मैंने बोला कि बेसिक प्रिंसिपल्स में स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स और डिटर्मिनेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आया. फिर मैं बोला इक्विलिब्रियम स्टडी फेनोमेनन, जिसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, बफर, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, बेसिकली जो इसमें आता है सॉल्युबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन फेनोमेनन. रिमेंबर फॉर दिस इज अनदर टॉपिक और क्लस्टर. नेक्स्ट यू आर हैविंग काइनेटिक फेनोमेनन, जिसमें क्या मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस अ मेम्ब्रेन और अक्रॉस द मीडियम स्टडी करते हैं, along with the degradation. तो उसमें आता है फर्स्टली द केमिकल काइनेटिक्स एंड ड्रग स्टेबिलिटी, नेक्स्ट इज द ड्रग रिलीज एंड डिसोल्यूशन, thirdly is the drug diffusion. ये तीन टॉपिक्स इसमें आते हैं. So this is also a very important aspect for your oral drug delivery system. Next comes your disposed system. This is a separate entity. This is a very important topic and is having its own arena of understanding. R&D labs may, what I have seen, along with the oral, when we are not dealing with the oral systems, or you are not dealing with the solid oral systems, you eventually come across with this dispersed systems. So these dispersed systems में क्या होता है? These dispersed systems, they mainly deal with your emulsions or suspensions, nano emulsion, micro emulsions, or nano suspensions, or maybe only suspensions you are preparing. So based on those, if you are having these delivery systems, you will be using the concept of this dispersed system therapy. उसको क्या है? For understanding these topics, number one, you have to go through the interfacial phenomenon or IT, or surface tension. Firstly, you should know what is the surface tension. आपको पता है surface tension क्या है? There's an important thing I forgot to tell you about. Surface tension ये बहुत important चीज़ है. Rheology जैसा flow property of the liquids में आते हैं हम लोग, क्योंकि और एक rheology है, this powder rheology. This is flow of the powders which comes under your micromeritics. ठीक है, तो वो अलग टॉपिक है. इसमें आप एंगल ऑफ रिपोज वैसा आप डिस्कस करते हैं. दैट इज सेपरेट टॉपिक. पाउडर रियोलॉजी नहीं, मैं लिक्विड्स का जो रियोलॉजी है. नॉर्मली रियोलॉजी मतलब द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स.
को हम बोलते हैं, दैट्स द थिंग। सो इंटरफेशियल टेंशन ये क्या होता है? when you take two different liquids and you pour it in a glass or in a beaker, you will see that after pouring them together and mixing them, after some period of time, basically if you take oil and water and you pour it in a glass and just keep it for 10 minutes, you will, after some period of time, you will find that the oil is floating uh, above the water. Oil is floating above the water, isn't it? The two phases will be separated by interfacial boundary. There will be a boundary which will be separating both of them, oil and water. So this phenomenon of not non-miscibility, this judgment of this non-miscibility is being explained by the concept of interfacial tension, surface tension. If it is on the surface, there is air and water. If we see there is a surface, why the surface is being made? Why not the water is getting up? This is phenomenon comes under what we call it as the interfacial tension or surface tension. We'll discuss this also. Thereafter, what we have after this, what we are having, that's you should remember, ki, rheology. So this is second topic is rheology. Third topic, as I told you, force dispersion. That includes your suspensions. That includes your is emulsion, normal emulsion, micro emulsion, nano emulsion. This all the topics comes under the force dispersion. Third topic, which is important for you, is something called as your colloids. So that is very important topic for the for you. Interfacial tension, rheology, force dispersion, and colloids. This together forms your dispersed system. So when you are studying, you are having a study. Make it a point. You have cleared all the topics together. Okay. When you clear all the topics together, the entire concept is clear for you. The entire concept is clear for you. Take it from me. Okay. Apart from this, there are no other much important topics that are being there. Maybe some topics will be there along with this. But if you say physical pharmacy बस इतना ही है. आप बोलेंगे बस इतना ही है सर, आप बोल के छोड़ दिए. नहीं, मैं बोल के नहीं छोड़ा. मैं आप लोगों को आज एक चीज क्लियर कर दिया कि ये जो सब्जेक्ट है, ये अगर टेक्निकली आप इसको पढ़ेंगे, इफ यू स्टडी इट टेक्निकली, if you follow the science of gaining a knowledge of physical pharmacy as I have discussed today, so you will not get a problem anytime. Kabhi bhi you don't make a rush. First make it a point, don't make a rush. कोई जल्दबाजी नहीं करो. नंबर 2 पॉइंट वो है कि ये जो फॉर्मूलाज है इसको पहले अंडरस्टैंड करो. मगअप नहीं करने का. आप लोग क्या करते हैं, मगअप करते हैं. फॉर्मूलाज जो होता है ना, सी दैट फॉर्मूला, ट्राई टू गेट द फॉर्मूला इन द पैटर्न ऑफ y इक्वल्स टू mx प्लस c. सोचिए ये इसका ग्राफ कैसा है. इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ है. कंपलसरी मतलब ये इक्वेशन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. आप उसका फॉर्मूला देखिए, इसमें y कौन सा है, m कौन सा है, x कौन सा है, c कौन सा है. जरा देखिए इसको. देखने के बाद आपको जब क्लियर आइडिया हो जाए कि हाँ ये है, it is easy for you to just recall in your mind. It is very easy for you to see the graph and how it works. आपको theory बोलना नहीं पड़ेगा, आप theory को explain करेंगे तब. You got my point. अगर आप वो ग्राफ को समझ लिए ना, then you know not to explain the theory. Theory will automatically will get explained from the graph. Okay, so that is one thing. So another important thing is the books which I need to say. I'm repeating it. Why? Because it is very essential thing. Most of us, what we do, we just stick on to चलो सर का नोट्स है, सर का नोट्स पढ़ लेंगे, गाइड बुक है, गाइड बुक पढ़ लेंगे, ये पढ़ लेंगे, वो पढ़ लेंगे. क्या होगा मैं बोलूँगा, जब भी आप किताब को छोड़ के कोई भी क्वेश्चन वाइज प्रिपरेशन करें, या कोई मेरे जैसे मेरे वीडियोस देखेंगे. होपफुली मेरा वीडियोस मार्टिन को ही बेस करके रहेगा. सो आपको दिक्कत नहीं होगी. छोटा वीडियोस रहेगा. तो कोई भी आदमी नो व्हाट आई एम वर्किंग ऑन इट.
I'll be starting preparing the topics right now, छोटा छोटा करके आएगा. So you will be finding, suppose rheology का मैं topic start कर रहा हूँ. Okay, maybe right from this week I will be starting. So just as a discussion, ऐसे हम बात करते हैं ना, जैसे आपसे हम बात कर रहे हैं आज. So मेरा motive of learning ऐसा ही होता है. I will be just discussing with you, जैसे आप बात कर रहे हैं, इंटरेक्शन. वो इंटरेक्शन में आप सीखेंगे कि टॉपिक कैसा है. विल बी डिस्कसिंग, विल बी गिविंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ द टॉपिक. जहाँ पर एक्सप्लेनेशन चाहिए, मेरे देखिए, मैं आई डोंट यूज एनी बिग बोर्ड्स विद मी. मेरे पीछे कोई बिग बोर्ड नहीं है, वाइट बोर्ड नहीं है, या डिजिटल बोर्ड नहीं है जहाँ पर मैं लिखता रहूँ. आई डोंट डू लाइक दैट. जहाँ जहाँ आपको एक्सप्लेन करना है, ये जो छोटा सा बोर्ड है, दैट इज सफिशिएंट. बीट्स ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी गिवन टू यू. मेरे को दिखावा नहीं करना कि चलो इतना लिख दिया सर ने, और इतना बड़ा लिख दिया, चलो देख लिया, ये कर दिया. नो, नहीं चाहिए. छोटा छोटा बीट ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए मेरा एक छोटा वाइट बोर्ड है, वही काफ़ी है. नहीं तो मैं जहाँ, इफ एनी टाइम आई रिक्वायर, आई विल बी पुटिंग ऑन द वाइट बोर्ड बिहाइंड मी. बट ये जो चीज़ है, दिस इज द टेक्निक विच यू विल बी गेटिंग इट. And another thing is that at the end of each sessions, probably with this after this, when I will be uploading my videos, you'll be getting my telegram group also. So try to join in the telegram group. So in the telegram group, I will be giving frequent formulas or frequent questions, MCQs, to make yourself updated regarding various topics which are being discussed over here. So be a part of it. And obviously another important thing is that try to be a part of my community. Now Hassan Pharma Pathshala, what I'm having this I'm having, I'm not this is not something called as profit making body. I have not done so till so अगर चाहता तो हो सकता था, but I have not done it. So this is so I wish कि people join over here. Students join over here. Not only this is not only for students. These are also for the novel, the new researchers, the budding researchers who are joining. This physical pharmacy topic is very essential for those who are working in R&D. I have seen in my career, in my short career as a R&D scientist, I have seen what is the importance of this physical pharmacy. So please, it's my kind request, learn this physical pharmacy with greater importance. Okay, and what I have discussed today, please go through that. That is also very essential. I will be setting something, just make a note. So as I told, chunking of the subject, I did it. If you see and saying that you have to do. Mind mapping, that's an important thing. Mind mapping you have to do. Okay. Then time blocking strategy. So you have to block certain, when you are studying something, you have to give greater time for your concepts, then certain time for your recalling the topics, then what you call studying on the questions or videos or whatever the questions I have been supplying, then reviewing the video what I have discussed. So this is what we call it as time blocking strategy. Okay. And obviously when I will be discussing the topic in the next, in my video sessions, as we'll go topic wise. So we will be giving you the menomics. We will be giving you set menomics or easy tricks wherever it is there. We will be just applying more. So you have to go through that. Okay. And apart from this, I think nothing more to be added of. So I wish you had loved this session today. And as I end note what to the session, I will say please subscribe the channel. I wish all of you subscribe the channel and share the videos with your friends, with your colleagues, with your students, so that they may gain some information. If you want to enrich any information, obviously the comment is open for all. You can have an open discussion. Any topic which you find may be contradictory to your point of view,
you are open to write over there in my comment box. I will personally try to answer it as much as possible to my knowledge concern. And obviously, try to be the part of the community from next videos which I am going to post. Those will be entirely based upon the topic concern of physical pharmacy. And as I told you, for biopharmaceutics, the entire pharmacokinetic important topics of biopharmaceutics and pharmacokinetics are already been uploaded in this channel. So you are requested to follow that. Okay, you just follow the topics, and I hope so. This is a very hopefully the a very interactive session for you. Thank you.